evening chanting. Yo so Bhagava Arahan Samma Sambuddho Sakato Yena Bhagavata Dhammo Supatipanno Yassa Bhagavato Sakasangho Tamayang Bhagavantang Sadammang Sasanghang Ime Sakare Yatarhanaro Pete Abhipujayama Sadhuno Bhante Bhagavan Suchira Parinebhutopi Pachima Janatanukampamanisa Ime Sakare Dugatpanakara Bhute Patiganhatu Amhakam Gigaratam Hitaya Sukhaya Araham Sama Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami Khandmayam Buddhasya Bhagavato Ubhagnam Karam Karomasi Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Khandmayam Buddhanusatinayam Karomasi Kamkhopanam Bhagavantang eva kalyano kiti saddho abhagato iti piso bhagava arhan samma sambuddho vidyacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisudhammasarati sattadeva manussana buddho bhagavati Khandmayam Buddha Viditim Karomasi Buddha Varahanta varata diguna Yuddha Vijnana Karuna Isamagatato Bodhesiyo Sujanata Kamalang Vasuro Vandamiham Tamarit Sirsajinendam Buddhoyo Sabbapāninam Saranam Kemamuttamam Patamanusatirthanam Vandami tam sirenam Buddhasasmi daso Buddho me sami kesaro Buddhasam niyademi Sariram jivitam chedam Vandantoham charisami Eva subodhitang Nati me saranang anyang Buddho me saranang varang Etena sajjavajjena
वड्डेयं सत्तु शासने बुद्धं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं यदा लब्धेऽपि अन्तरायामि माहेषुं तस्य तेजसा देवकं पकटमय बुद्धोपटिगनाथोच्यन्तं कालान्तरे संवरितुं न बद्धे आनन्दमयं धम्मानुसतिनयं करोमसि कातो भगवता धम्मो सन्दिट्ठिको अकालिको वस्तिको ओपनैको पश्चात्तं वेदितव्यो न्यूहीति आनन्दमयं धम्माभिगीतिं करोमसि गुणयोगवसेन सेयो यो मार्गपाकपर्यत्ति विमोकभेदो धम्मोकुलोकपठन तदधारि धारी वन्दाम्यहं तमधम्ममेतं धम्मो यो सर्वपाणिनं शरणं क्षेममुत्तमं द्वितीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहं धम्मस्मि दासो धम्मो मे सामिकेस्सरो धम्मस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि धम्मस्येव सुधम्मतं नास्ति मे शरणं अन्यत् धम्मो मे शरणं वरं एतेन सच्च वड्डेयं सत्तु शासनी धम्मं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पसुतं यदा सर्वेऽपि अन्तरायामि माहेशुं तस्य तेजसा धम्मेकं भक्तमे धम्मोपटिगनाथोच्यन्तं कालान्तरे संवरितं धम्मे आनन्दमयं सङ्घानुसतिनयं करोमसि पन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो सामीचिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुङ्गला येषु भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुने दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यकेत्तं लोकसाति आनन्दमयं सङ्गाभिगीतिं करोमसि सधम्मजो सुपटिपत्ति गुणादियुतो यो अट्ठविधो अरियपुङ्गलसङ्गसेठो शीलादिधम्मपराशयकाय चित्तो वन्दाम्यहं तमर्यानगणं सुशुद्धं सङ्गोयो सर्वपाणिनं शरणं क्षेममुत्तमं ततीयानुसतिष्ठान वन्दामि तं शिरेणहम् सङ्गस्सस्मिदासीव संगो मे सामिकेश्वरो
संगस्सहं नियादेमि शरीरं जीवितं चिदं वन्दन्तोऽहं चरिष्यामि संगस्योपटिपन्नतं नत्ति मे शरणं अन्यं संगो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवज्जेन वड्डेयं सत्तु शासने संगं मे वन्दमानेन यं पुण्यं पशुतं हिदा तब्बेऽपि अन्तरायामि माहेशं तस्य तेजसा संघे को कर्मं प्रकटमय संगो पटिगनाथ अत्यंत कालांतरे संवरित संघे। अब आज पतच्छ समुत्पाद का पाठ करेंगे। Page 138. अविद्या पच्चया संखारा संखार पच्चया विज्ञानम विज्ञान पच्चया नाम रूपं नाम रूप पच्चया षडायतनं षडायतन पच्चया पस्सु पस्स पच्चया वेदना वेदना पच्चया तन्हा तन्हा पच्चया उपादान उपादान पच्चया भव भव पच्चया जाति जाति पच्चया जरा मरण शोक परिदेव दुःख दोमनस सापि एवमेतस्य केवलस्य दुःखकन्दस्य समुदयोति अविद्याय त्वमेव अशेष अशेष विराग निरोध संखार निरोधो संहार निरोधो विज्ञान निरोध विज्ञान निरोधो नाम रूप निरोधो नाम रूप निरोध षडायतन निरोधो षडायतन निरोध भस्स निरोधो भस्स निरोध वेदना निरोधो वेदना निरोध षडाय निरोधो तन्हा निरोध उपादान निरोधो उपादान निरोध भव निरोधो भव निरोध जाति निरोधो जाति निरोध जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्सु उपायासा निरुध्यन्ते एवमेतस्य तस्य दुःखकन्दस्य निरोधो होति।
So we'll now listen to Desana of Ajancha. Its topic is Two Faces of Reality. This is the 42nd talk in this collection, and it's entitled Two Faces of Reality. And this was also, like Dhamma-Nature, it was first published in Bodhinyana, which was the first book that was done of Luang Por Chah's teachings in English. And this was a discourse delivered to the assembly of monks after the recitation of the Patimokkha, the monks' disciplinary code at Wat Pah Pong during the Rains Retreat of 1976. The two faces of reality. In our lives, we have two possibilities: indulging in the world or going beyond the world. The Buddha was someone who was able to free himself from the world and thus realized spiritual liberation. In the same way, there are two types of knowledge: knowledge of the worldly realm and knowledge of the spiritual, or true wisdom. If we've not yet practiced and trained ourselves, no matter how much knowledge we have, it's still worldly and thus cannot liberate us. Think and really look closely. The Buddha said that the things of the world spin the world around. Following the world, the mind is entangled in the world. It defiles itself whether coming or going, never remaining content. Worldly people are those who are always looking for something, never finding enough. Worldly knowledge is really ignorance. It isn't knowledge with clear understanding. Therefore, there is never an end to it. It revolves around the worldly goals of accumulating things, gaining status, seeking praise and pleasure. It's a massive delusion which has us stuck fast. Once we get something, there's jealousy, worry, and selfishness. And when we feel threatened and can't ward it off physically, we use our minds to invent all sorts of devices, right up to weapons and even nuclear bombs, only to blow each other up. Why all this trouble and difficulty? This is the way of the world. The Buddha said that if one follows it around, there is no reaching an end. So, come to practice for liberation. It isn't easy to live in accordance with true wisdom, but whoever earnestly seeks the path and fruit and aspires to Nibbana will be able to persevere and endure. Endure being contented and satisfied with little, eating little, sleeping little, speaking little, and living in moderation. By doing this, we can put an end to worldliness. If the seed of worldliness has not yet been uprooted, then we are continually troubled and confused in a never-ending cycle. Even when you come to ordain, it continues to pull you away. It creates your views, your opinions. It colors and embellishes all your thoughts. That's the way it is. People don't realize. They say that they'll get things done in the world. It's always their hope to complete everything. Just like a new government minister who's eager to get started with his new administration. He thinks he has all the answers, so he carts away everything of the old administration saying, "Look out, I'll do it all myself." That's all they do, cart things in and cart things out, never getting anything done. They try, but they never reach any real completion. You can never do something which will please everyone. One person likes a little, another likes a lot. One likes short, one likes long. One likes salty, some like spicy. To get everyone together and in agreement just cannot be done. All of us want to accomplish something in our lives, but the world, with all of its complexities, makes it almost impossible to bring about any real completion. Even the Buddha, born with all the opportunities of a noble prince, found no completion in the worldly life. The trap of the senses. The Buddha talked about desire and the 6 things by which desire is gratified: sights, sounds, smells, tastes, touch, and mind objects. Desire and lust for happiness, for suffering, for good, for evil, and so on pervade everything. Sights. There isn't any sight that's quite the same as that of a woman, is there? Doesn't a really attractive woman make you want to look? One with a really attractive figure comes walking along, suck, 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 suck. That's what it says. You can't help but stare. So please note, this is to the assembly of monks after the recitation of the rule. This wasn't out in the silo for the whole whole assembly of both genders. So this is monk talk. You can't help but stare. How about sounds?
There's no sound that grips you more than that of a woman. It pierces your heart. Smell is the same. A woman's fragrance is the most alluring of all. There's no other smell that's quite the same. Taste. Even the taste of the most delicious food cannot compare with that of a woman. Touch is similar. When you caress a woman, you're stunned, intoxicated, and sent spinning all around. There was once a famous master of magical spells from Taxila in ancient India. He taught his disciples all his knowledge of charms and incantations. When the disciple was well versed and ready to fare on his own, he left with this final instruction from his teacher. I have taught you all that I know of spells, incantations, and protective verses. Creatures with sharp teeth, antlers or horns, or even big tusks, you need have no fear of them. You'll be guarded from all of these, I can guarantee that. However, there is only one thing that I cannot ensure protection against, and that is the charms of a woman. I cannot help you there. There's no spell for protection against this one. You'll have to look after yourself. Mental objects arise in the mind. They're born out of desire. Desire for valuable possessions, desire to be rich, and just restless seeking after things in general. This type of greed isn't all that deep or strong. It isn't enough to make you faint or lose control. However, when sexual desire arises, you're thrown off balance and you lose your control. You'd even forget those who raised you and brought you up, your own parents. The Buddha taught that the objects of our senses are a trap of Mara. Mara should be understood as something which harms us. The trap is something which binds us, the same as a snare. It's a trap of Maras, a hunter's snare, and the hunter is Mara. If animals are caught in the hunter's trap, it's a sorrowful predicament. They're caught fast and held waiting for the owner of the trap. Have you ever snared birds? The snare springs and boop, caught by the neck. A good strong string now holds it fast. Wherever the bird flies, it cannot escape. It flies here and it flies there, but it's held tight, waiting for the owner of the snare. When the hunter comes along, that's it. The bird is struck with fear. There's no escape. The trap of sights, sounds, smells, tastes, touch, and mind objects is the same. They catch us and bind us fast. If you attach to the senses, you're the same as a fish caught on a hook. When the fisherman comes, struggle all you want, but you can't get loose. Actually, you're not caught like a fish. It's more like a frog. A frog gulps down the whole hook right to its guts. A fish just gets it caught in the mouth. Anyone attached to the senses is the same. Like a drunk whose liver is not yet destroyed, he doesn't know when he's had enough. He continues to indulge and drink carelessly. He's caught and later suffers illness and pain. A man comes walking along a road. He's very thirsty from his journey and is craving a drink of water. The owner of the water says, "You can drink this water if you like. The color is good, the smell is good, the taste is good. But if you drink it, you'll become ill. I must tell you this beforehand. It'll make you sick enough to die or nearly die." The thirsty man doesn't listen. He's as thirsty as a person after an operation who's been denied water for 7 days. He's crying for water. It's the same with a person thirsting after the senses. The Buddha taught that they are poisonous. Sights, sounds, smells, tastes, touch, and mind objects are poison. They're a dangerous trap. But this man is thirsty and he doesn't listen. Because of his thirst, he's in tears crying, "Give me water, no matter how painful the consequences, let me drink." So he dips out a bit and swallows it, finding it very, very tasty. He drinks his fill and gets so sick that he almost dies. He didn't listen because of his overpowering desire. This is how it is for a person caught in the pleasures of the senses. He drinks in sights, sounds, smells, tastes, touch, and mind objects. They're all very delicious. So he drinks without stopping, and there he remains, stuck fast until the day he dies. The worldly way and liberation. Some people die. Some people almost die. That's how it is to be stuck in the way of the world. Worldly wisdom seeks after the senses and their objects. However wise it is, it's only wise in a worldly sense. No matter how appealing it is, it's only appealing in a worldly sense. However much happiness it is, it's only happiness in a worldly sense. It isn't the happiness of liberation. It won't free you from the world. We have come to practice as monks in order to penetrate true wisdom, to rid ourselves of attachment. Practice to be free of attachment. Investigate the body. Investigate everything around you until you become weary and fed up with it all.
and then dispassion will set in. Dispassion will not arise easily, however, because you still don't see clearly. We come and ordain. We study, we read, we practice, we meditate. We determine to make our minds resolute, but it's hard to do. We resolve to do a certain practice. We say that we'll practice in this way. Only a day or two goes by, maybe just a few hours pass, and we forget about it all. When we remember, we try to make our minds firm again, thinking, this time I'll do it right. Shortly after that, we're pulled away by one of our senses, and it all falls apart again. So we have to start all over again. This is how it is. Like a poorly built dam, our practice is weak. We are still unable to see and follow true practice. And it goes on like this until we arrive at true wisdom. Once we penetrate to the truth, we're freed from everything. Only peace remains. Our minds aren't peaceful because of our old habits. We inherit these because of our past actions, and they thus follow us around and constantly plague us. We struggle and search for a way out, but we're bound by them, and they pull us back. These habits don't forget their old grounds. They grab onto all the old familiar things to use, to admire, and to consume. That's how we live. The sexes of men and women. Women cause problems for men, men cause problems for women. That's the way it is. They're opposites. If men live together with men, then there's no trouble. Yeah. If women... Just war. If women live together with women, then there's no trouble. When a man sees a woman, his heart pounds like a rice pounder. Dun 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 dun. What is this? What are those forces? It pulls and sucks you in. No one realizes that there's a price to pay. It's the same in everything. No matter how hard you try to free yourself, until you see the value of freedom and the pain in bondage, you won't be able to let go. People usually just practice enduring hardships, keeping the discipline, following the form blindly, but not in order to attain freedom or liberation. You must see the value in letting go of your desires before you can really practice. Only then is true practice possible. Everything that you do must be done with clarity and awareness. When you see clearly, there'll no longer be any need for enduring or forcing yourself. You have difficulties and are burdened because you miss this point. Peace comes from doing things completely, with your whole body and mind. Whatever is left undone leaves you the feeling of discontent. These things bind you with worry wherever you go. You want to complete everything, but it's impossible to get it all done. Take the case of the merchants who regularly come here and see me. They say, oh, when my debts are all paid and properly in order, I'll come and ordain. They talk like that, but when will they ever finish and get it all in order? There's no end to it. They pay off their debts with another loan. Then they pay off that one and do it all. Then they pay off that one and do it all over again. A merchant thinks that if he frees himself from debt, he'll be happy. But there's no end to paying things off. That's the way worldliness fools us. We go around and around like this, never realizing our predicament. Constant practice. In our practice, we just look directly at the mind. Whenever our practice begins to slacken off, we see it and make it firm. Then, shortly after, it goes again. That's the way it pulls you around. But the person with good mindfulness takes a firm hold and constantly reestablishes himself, pulling himself back, training, practicing and developing himself in this way. The person with poor mindfulness just lets it all fall apart. He strays off and gets sidetracked again and again. He's not strong and firmly rooted in practice. Thus he's continuously pulled away by his worldly desires. Something pulls him here, something pulls him there. He lives following his whims and desires, never putting an end to this worldly cycle. Coming to ordain is not so easy. You must determine to make your mind firm. You should be confident in the practice, confident enough to continue practicing until you become fed up with both your likes and your dislikes and see in accordance with truth. Usually, you're dissatisfied only with what you dislike. If you like something, then you aren't ready to give it up. You have to become fed up with both what you like and what you dislike.
your suffering and your happiness. You don't see that this is the very essence of the Dhamma. The Dhamma of the Buddha is profound and refined. It isn't easy to comprehend. If true wisdom has not yet arisen, then you can't see it. You don't look forward and you don't look back. When you experience happiness, you think that there will only be happiness. When there's suffering, you think there will only be suffering. You don't see that wherever there is big, there is small. Wherever there is small, there is big. You don't see it that way. You only see one side, and thus it's never ending. There are two sides to everything. You must see both sides. Then when happiness arises, you don't get lost. When suffering arises, you don't get lost. When happiness arises, you don't forget the suffering, because you see that they are interdependent. In a similar way, food is beneficial to all beings for the maintenance of the body, but actually, food can also be harmful. For example, when it causes various stomach upsets. When you see the advantages of something, you must perceive the disadvantages also, and vice versa. When you feel hatred and aversion, you should contemplate love and understanding. In this way, you become more balanced, and your mind becomes more settled. The empty flag. I once read a book about Zen. In Zen, you know, they don't teach with a lot of explanation. For instance, if a monk is falling asleep during meditation, they come along with a stick and whack! They give him a hit on the back. When the erring disciple is hit, he shows his gratitude by thanking the attendant. In Zen practice, one is taught to be thankful for all of the feelings which give one the opportunity to develop. One day there was an assembly of monks gathered for a meeting. Outside the hall, a flag was blowing in the wind. There arose a dispute between two monks as to how the flag was actually blowing in the wind. One of the monks claimed that it was because of the wind, while the other argued that it was because of the flag. Thus they quarreled because of their narrow views and couldn't come to any kind of agreement. They would have argued like this until the day they died. However, their teacher intervened and said, "Neither of you is right. The correct understanding is that there is no flag and there is no wind." This is the practice, not to have anything, not to have the flag, not to have the wind. If there's a flag, then there's the wind. If there's a wind, then there's the flag. You should contemplate and reflect on this thoroughly until you see in accordance with truth. If considered well, then there will remain nothing. It's empty, void, empty of the flag and empty of the wind. In the great void, there is no flag and there is no wind. There is no birth, no old age, no sickness or death. Our conventional understanding of flag and wind is only a concept. In reality, there is nothing. That's all. There is nothing more than empty labels. If we practice in this way, we'll come to see completeness, and all of our problems will come to an end. In the great void, the king of death will never find you. There is nothing but old age, sickness, and death to follow. When we see and understand in accordance with truth, that is, with right understanding, then there is only this great emptiness. It's here that there is no more we, no they, no self at all. The forest of the senses. The world with its never-ending ways goes on and on. If we try to understand it all, it leads us only to chaos and confusion. However, if we contemplate the world clearly, then true wisdom will arise. The Buddha himself was one who was well versed in the ways of the world. He had great ability to influence and lead because of his abundance of worldly knowledge. Through the transformation of his worldly mundane wisdom, he penetrated and attained to supramundane wisdom, making him a truly superior being. So, if we work with this teaching, turning it inwards for contemplation, we will attain to an understanding on an entirely new level. When we see an object, there is no object. When we hear a sound, there is no sound. In smelling, we can say that there is no smell. All of the senses are manifest, but they are void of anything stable. They're just sensations that arise and then pass away. If we understand according to this reality, then the senses cease to be substantial. They're just sensations which come and go. In truth, there isn't anything. If there isn't anything, then there is no we and no they. If there is no we as a person, then there is nothing belonging to us. It's in this way that suffering is extinguished. There isn't anybody to acquire suffering. So, who is it that suffers? When suffering arises, we attach to the suffering,
and thereby must really suffer. In the same way, when happiness arises, we attach to the happiness and consequently experience pleasure. Attachment to these feelings gives rise to the concept of self or ego, and thoughts of we and they continually manifest. Nah. Here is where it all begins, and then carries us around in a never-ending cycle. So, we come to practice meditation and live according to the Dhamma. We leave our homes to come and live in the forest and absorb the peace of mind it gives us. We have fled in order to contend with ourselves, not through fear or escapism. But people who come and live in the forest become attached to living in it, just as people who live in the city become attached to living in the city. They lose their way in the forest, and they lose their way in the city. The Buddha praised living in the forest because the physical and mental solitude that it gives us is conducive to the practice for liberation. However, he didn't want us to become dependent upon living in the forest or get stuck in its peace and tranquility. We come to practice in order for wisdom to arise. Here in the forest, we can sow and cultivate the seeds of wisdom. Living amongst chaos and turmoil, these seeds have difficulty in growing. But once we've learned to live in the forest, we can return and contend with the city and all the stimulation of the senses that it brings us. Learning to live in the forest means to allow wisdom to grow and develop. We can then apply this wisdom no matter where we go. When our senses are stimulated, we become agitated, and the senses become our antagonists. They antagonize us because we're still foolish and don't have the wisdom to deal with them. In reality, they are our teachers, but because of our ignorance, we don't see it that way. When we lived in the city, we never thought that our senses could teach us anything. As long as true wisdom has not yet manifested, we continue to see the senses and their objects as enemies. Once true wisdom arises, they're no longer our enemies, but become the doorway to insight and clear understanding. A good example are the wild chickens here in the forest. We all know how much they are afraid of humans. However, since I've lived here in the forest, I've been able to teach them and learn from them as well. At one time, I began throwing out rice for them to eat. At first, they were very frightened and wouldn't go near the rice. However, after a long time, they got used to it and even began to expect it. You see, there's something to be learned here. They originally thought that there was danger in the rice, that the rice was an enemy. In truth, there was no danger in the rice, but they didn't know that the rice was food, and so they were afraid. When they finally saw for themselves that there was nothing to fear, they could come and eat without any danger. The chickens learn naturally in this way. Living here in the forest, we learn in a similar way. Formerly, we thought that our senses were a problem, and because of our ignorance in the proper use of them, they caused us a lot of trouble. However, by experience in practice, we learn to see them in accordance with the truth. We learn to make use of them, just as the chickens could use the rice. Then we no longer see them as opposed to us, and then our problems disappear. As long as we think, investigate, and understand wrongly, these things will appear to oppose us. But as soon as we begin to investigate properly, that which we experience will bring us to wisdom and clear understanding, just as the chickens came to their understanding. In this way, we can say they practiced vipassana. They know in accordance with truth. It's their insight. In our practice, we have our senses as tools, which, when rightly used, enable us to become enlightened to the Dhamma. This is something which all meditators should contemplate. When we don't see this clearly, we remain in perpetual conflict. So, as we live in the quietude of the forest, we continue to develop subtle feelings and prepare the ground for cultivating wisdom. Don't think that when you've gained some peace of mind living here in the quiet forest, that that's enough. Don't settle for just that. Remember that we have to cultivate and grow the seeds of wisdom. As wisdom matures and we begin to understand in accordance with the truth, we will no longer be dragged up and down. Usually, if we have a pleasant mood, we behave one way. And if we have an unpleasant mood, we behave another way. We like something and we're up. We dislike something and we're down. In this way, we're still in conflict with enemies. When these things no longer oppose us, they become stabilized and balance out. They're no longer ups and downs or highs and lows. We understand these things of the world and know that that's just the way it is. It's just worldly Dhamma. Worldly Dhamma, this is the 8 worldly conditions of gain and loss, honor and dishonor, happiness and misery, and praise and blame.
Worldly Dhamma changes to become the path. Worldly Dhamma have 8 ways. The path has 8 ways. Wherever worldly Dhamma exists, the path is to be found also. When we live with clarity, all our worldly experience becomes the practicing of the Eightfold Path. Without clarity, worldly Dhamma predominates, and we're turned away from the path. When right understanding arises, liberation from suffering lies right here before us. You'll not find liberation by running around looking elsewhere. So don't be in a hurry to try to push or rush your practice. Do your meditation gently and gradually, step by step. In regard to peacefulness, if you want to become peaceful, then accept it. If you don't become peaceful, then accept that also. That's the nature of the mind. We must find our own practice and persistently keep at it. Perhaps wisdom does not arise. I used to think about my practice that when there is no wisdom, I could force myself to have it. But it didn't work. Things remained the same. Then after careful consideration, I saw that to contemplate things that we don't have cannot be done. So what's the best thing to do? It's better just to practice with equanimity. If there's nothing to cause us concern, then there's nothing to remedy. If there's no problem, then we don't have to try to solve it. When there's a problem, that's when you must solve it, right there. There's no need to go searching for anything special. Just live normally. But know what your mind is. Live mindfully and clearly comprehending. Let wisdom be your guide. Don't live indulging in your moods. Be heedful and alert. If there is nothing, that's fine. When something arises, then investigate and contemplate it. Coming to the center. Try watching a spider. A spider spins its web in any convenient niche and then sits in the center, staying still and silent. Later, a fly comes along and lands on the web. As soon as it touches and shakes the web, boop! The spider pounces and winds it up in the thread. It stores the insect away and then returns again to collect itself silently in the center of the web. Watching a spider like this can give rise to wisdom. Our 6 senses have mind at the center, surrounded by eye, ear, nose, tongue, and body. When one of the senses is stimulated, for instance, form contacting the eye, it shakes and reaches the mind. The mind is that which knows form. Just this much is enough for wisdom to arise. It's that simple. Like a spider in its web, we should live keeping to ourselves. As soon as the spider feels an insect contact the web, it quickly grabs it, ties it up, and once again returns to the center. This is not at all different from our own minds. Coming to the center means living mindfully with clear comprehension, being always alert and doing everything with exactness and precision. This is our center. There's really not a lot for us to do. We just carefully live in this way. But that doesn't mean that we live heedlessly, thinking there's no need to do sitting or walking meditation, and so forget all about our practice. We can't be careless. We must remain alert, just as the spider waits to snatch up insects for its food. This is all that we have to know. Sitting and contemplating that spider, just this much, and wisdom can arise spontaneously. Our mind is comparable to the spider. Our moods and mental impressions are comparable to the various insects. That's all there is to it. The senses envelop and constantly stimulate the mind. When any of them contact something, it immediately reaches the mind. The mind then investigates and examines it thoroughly, after which it returns to the center. This is how we abide, alert, acting with precision, and always mindfully comprehending with wisdom. Just this much and our practice is complete. This point is very important. It isn't that we have to do sitting practice throughout the day and night, or that we have to do walking meditation all day and all night long. If this is our view of practice, then we are really going to make it difficult for ourselves. We should do what we can according to our strength and energy, using our physical capabilities in the proper amount. It's very important to know the mind and the senses well, know how they come and go, how they arise and how they pass away. Understand this thoroughly. In the language of Dhamma, we can also say that, just as the spider traps the various insects, the mind binds up the senses with anicca, dukkha, anatta, impermanence, unsatisfactoriness, and not self. Where can they go? We keep them for food. These things are stored up away as our nourishment. That's enough. There's no more to do. Just this much. This is the nourishment for our minds, nourishment for one who is aware and understanding.
If you know that these things are impermanent, bound up with suffering, and that none of it is you, then you'd be crazy to go after them. If you don't see clearly in this way, then you must suffer. When you take a good look and see that these things are really impermanent, even though they may seem worth going after, really, they're not. Why do you want them when their nature is pain and suffering? It's not ours. There is no self. There's nothing belonging to us. So why are you seeking after them? All problems are ended right here. Where else will you end them? Just take a good look at the spider and turn it inwards. Turn it back onto yourself. You will see that it's all the same. When the mind has seen anicca, dukkha, anatta, it lets go and releases itself. It no longer attaches to suffering or to happiness. This is the nourishment for the mind of one who practices and really trains himself. That's all. It's that simple. You don't have to go searching anywhere. So, no matter what you're doing, you are there. No need for a lot of fuss and bother. In this way, the momentum and energy of your practice will continuously grow and mature. Escape. This momentum of practice leads us towards freedom from the cycle of birth and death. We haven't escaped from that cycle because we still insist on craving and desiring. We don't commit unwholesome or immoral acts, but doing this only means that we're living in accordance with the Dhamma of morality. For instance, the chanting when people ask that all beings not be separated from the things that they love and are fond of. If you think about it, this is very childish. It's the way of people who still can't let go. This is the nature of human desire. Desire for things to be other than the way they are, wishing for longevity, hoping that there is no death or sickness. This is how people hope and desire. When you tell them that whatever desires they have which are not fulfilled cause suffering, it clobbers them right over the head. What can they say? Nothing, because it's the truth. You're pointing right at their desires. When we talk about desires, we know that everyone has them and wants them fulfilled, but nobody is willing to stop. Nobody really wants to escape. Therefore, our practice must be patiently refined down. Those who practice steadfastly, without deviation or slackness, have a gentle and restrained manner. Always persevering with constancy, those are the ones who will know. No matter what arises, they will remain firm and unshakable. This is the प्रवचन का हिंदी अनुवाद करते हैं। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग कमेंट्स किए गए हैं। भूमिका ये है कि भिक्षुओं को टॉक दी गई थी, प्रतिमुख की चैंटिंग होती है उपस्थित के बाद, उसके बाद दी गई थी, तो इसलिए काफी कई चीजें जो कही गई हैं वो भिक्षुओं के लिए खास तौर पर कही गई। हमारे जीवन में दो संभावनाएं रहती हैं, या तो हम संसार में उलझे रहें या संसार से परे ऊपर उठ जाएं। भगवान बुद्ध ऐसे थे जिन्होंने इन चीज़ों को ठीक से समझा और संसार से अपने को मुक्त कर पाए। इसी तरह से दो तरह के ज्ञान होते हैं, एक सांसारिक ज्ञान और एक आध्यात्मिक ज्ञान या सच्चा प्रज्ञा। अगर हमने ठीक से नहीं समझा है तो हम सांसारिक ज्ञान में उलझ सकते हैं, जो कि हमको मुक्त नहीं करेगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे कि जो संसार की को फॉलो करते हैं तो मन हमेशा उसमें अटका रहता है और हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढता रहता है, कुछ ना कुछ चाहता रहता है। तो इस प्रकार जो सांसारिक ज्ञान है वो एक तरह की अविद्या ही है, क्योंकि उसमें संपर्क ज्ञान नहीं है और इसलिए उसका अंत कभी नहीं हो सकता। वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी, गोल्स बढ़ते रहेंगे, स्टेटस, प्रेज,
प्रशंसा, सुख, इसी चक्र में हम चलते रहते हैं। और कुछ मिल जाए तो फिर ईर्ष्या, चिंता, ये सब रहती हैं। और उस चक्र का इस हद तक आगे बढ़ गया है कि अब कई तरह के अम्युनिशन, कई तरह के बम तक बना लिए हैं दूसरों को मारने के लिए। ये सब यही संसारिक ज्ञान को उलझने के कारण है और यही संसार के तरीके हैं। लेकिन अगर आप यहाँ मुक्ति के लिए आए हैं तो जो सच्ची प्रज्ञा है उसके अनुसार जीना आसान नहीं है, क्योंकि हमको धैर्य रखना पड़ता है, शांति रखनी पड़ती है, थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, थोड़ा बात करना, जीवन में आत्मसंयम करना, उसी से हम संसारिकता को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर संसारिकता का बीज नहीं समाप्त हुआ है तो हम हमेशा परेशान ही रहेंगे। और चाहे आप यहाँ पे भिक्षु बनने भी आ जाएं, फिर भी संसार आपको खींच कर रहेगा। लोग इस बात को समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि हम संसार से अपने काम करवा लेंगे। उसी तरह से जैसा एक संसार, एक सरकार का नया मंत्री है, वो सोचता है मैं जल्दी काम करूं और मेरे को उसको लगता है कि मेरे पास सभी उत्तर है, मैं हर कुछ सब कुछ ठीक कर दूंगा। और जो पुराने मंत्री ने किया वो सबको निकाल दिया, कहते हैं ठीक हो, मैं कैसे सब कुछ सुधारता हूँ, लेकिन कहीं कुछ होता नहीं है। आप कभी भी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जिससे सभी लोग प्रसन्न हो। किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। हम सब संसार में अपने जीवन के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसको समाप्ति तक ले जाना संभव नहीं है, क्योंकि संसार का स्वरूप ही ऐसा है। प्रथा इंद्रियों का जो चक्र है। तो भगवान बुद्ध ने देखा कि जो तृष्णाएं हैं वो 6 तरह की तृष्णाएं हैं। देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की, छूने की और सोचने की। और उनको एक और पैराडाइम में देखा जाए तो है कि सुख की तृष्णा, दुख से दूर हटने की तृष्णा। अब जैसे फिर एक एक करके उनकी चक्र कर रहे हैं कि जो दृश्य देखने की बात है, वो बता रहे कि एक पुरुष के लिए स्त्री को देखने के समान कोई और चीज नहीं होती। बहुत बार बार उसको देखने का मन करता है। इसी तरह स्त्री की आवाज, स्त्री की स्मेल, स्त्री का टेस्ट, स्त्री का टच। तो एक उदाहरण बता रहे हैं कि एक तक्षशिला में एक बहुत मशहूर आचार्य थे, जिनके पास कई तरह के स्पेल जो होते हैं, जादुई स्पेल करने के तरीके थे। और उसने अपने इस डिसाइपल को एक जो सबसे अच्छा था सब कुछ सिखा दिया। और जब वो तैयार हुआ और जाने लगा तो उससे कहा कि देखो, मैंने तुम्हें जो भी जानता हूँ वो सब सिखा दिया है। चाहे वो किसी भी तरह के जंतु हों, तेज शार्प दांतों वाले हों, सींग वाले हों, बड़ी बड़ी दुम वाले हों, बड़े बड़े सूंड वाले हों, उस सब से तुमको डरने की ज़रूरत नहीं। ये सारे जो प्रोटेक्शंस हैं वो तुमसे उससे बचा लेंगे। बस एक ही चीज़ से तुम्हें नहीं बचा सकता मैं, वो है कि स्त्री के जो चार्म्स हैं उससे बचाना, वो तुमको अपने आप करना पड़ेगा। जो विचार हैं हमारे वो प्रायः तृष्णा से ही प्रेरित होते हैं। जैसे महंगी चीज़ें प्राप्त करना, अमीर बनना, कोई ना कोई चीज़ चाहते रहना, इस तरह का जो लोभ है वो इतना ज़्यादा गहरा नहीं है। लेकिन जब वासना की इच्छा जागती है तो वो आपको सारे जो कंट्रोल है, बैलेंस है, वो आपको छूट जाता है और आप कुछ भी गलत काम कर सकते हैं। भगवान ने सिखाया कि जो इंद्रियों के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं, वो एक तरह से हमारे लिए
एक ट्रैप है, मारा का ट्रैप, जो हमको इस संसार चक्र में घुमाए रहता है। तो बता दें कि जैसे आपने कभी देखा है जिन पशुओं को किस तरह से वो शिकारी के चंगुल में फंस जाते हैं, कैसे परेशान होते हैं, उसी तरह से ये दृश्य, आवाज, शब्द, सुगंध, रस, स्पर्श और विचारों का भी ट्रैप है हमारे लिए एक। और ये जाल जो है हमको हमेशा बांध के रखता है और इससे निकल नहीं सकते। जैसे कि मछली की के एक मछुआरे के हुक में फंस जाती है तो निकल नहीं सकती, वही हाल हमारा भी होता है। तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक आदमी आता है, बहुत प्यासा है, वो सड़क पे चले जा रहा है, तो कोई आदमी उससे कहता है भाई ये पानी तो है और ये टेस्टी भी है, लेकिन इसको पीने से तेरे को बीमार हो जाएगा, हो सकता है मर भी जाए, ये मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ। लेकिन वो जो प्यासा आदमी कहता है मैं तो मारा जा रहा हूँ प्यास से, मुझे तो खाना ही, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो पीना ही है। और वो पीता है और फिर उसको टेस्ट भी अच्छा लगता है, लेकिन पीते ही धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो भगवान ने समझाया कि इसी तरह से जो ये 6 इंद्रियों के विषय हैं वो भी एक तरह के विष के समान ही हैं, बहुत भयंकर जाल हैं जिसमें हम फंस जाते हैं। और हमें इन सब की इतनी तृष्णा रहती है, इतनी प्यास रहती है कि जानते हुए भी कि ये दुख देंगे, हम फिर भी उसको पी लेते हैं और इसलिए दुख से निकल नहीं पाते। संसार में फंसना इस तरह का कहा जा सकता है कि कुछ लोग तो सचमुच में मर ही जाते हैं और कुछ लोग मृत प्राय हो जाते हैं। संसारिक ज्ञान जो है वो सब इंद्रियों और उनके विषयों के बारे में ही होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, वो उससे आप उस तरह का प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर सकते जैसे मुक्ति का सुख हो। हम लोग यहाँ भिक्षु बन के आए हैं तो इसलिए मुक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए आए हैं। उसके लिए शरीर को इन्वेस्टिगेट करना, उसको समझना, चारों तरफ से जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको समझना, और वो सब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि आप इस संसार के प्रति निबद्ध भाव न जाग जाए, निर्वेद भाव न जाग जाए। हम यहाँ आते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ साधना करते हैं और करते हैं नहीं हम बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे, लेकिन कुछ समय थोड़ी बहुत 1 या 2 ही दिन ही बीतता है, कुछ घंटे ही बीतते हैं और फिर सब उसके बारे में भूल जाते हैं और कहते हैं अच्छा अगली बार ठीक करेंगे। अगली बार फिर इंद्रियां हमें खींच के ले आती हैं और यही काम चलता रहता है। और हमारी पुरानी आदतों के कारण हमारा मन शांत नहीं हो पाता और वो पुरानी आदतें हमारे पीछे चली रहती हैं। फिर हमको अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से कभी इधर अटकते हैं, कभी उधर अटकते हैं। पुरुष जो है महिलाओं में अटक जाते हैं, महिलाएं पुरुषों में अटक जाती हैं। ये सब जगह यही कहानी है। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लें अपने को छोड़ने की, अपने को निकालने की, जब तक आप सच्ची मुक्ति का महत्व नहीं समझेंगे और बंधन का दुख नहीं समझेंगे तब तक आप छोड़ नहीं सकते। आप कितनी भी कोशिश करते रहें दुख को सहन करने की, डिसिप्लिन बनाए रखने की और जो भिक्षु का स्वरूप है उसको फॉलो करने की, लेकिन जब तक ये बात स्पष्ट नहीं हो जाती कि हाँ तृष्णाओं को छोड़ना बहुत अच्छी चीज़ है, तब तक कोई लाभ नहीं होगा। जो कुछ भी तुम करते हो वो समझदारी से, प्रज्ञा से और अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, क्योंकि जब तुम चीज़ों को ठीक से देखोगे तो फिर उनको सहन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको दिक्कतें इसलिए होती हैं क्योंकि आप वास्तु जो असली पॉइंट है वो मिस कर जाते हो कि भाई इस संसार में सुख नहीं है। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक अटके रहेंगे। अब कुछ व्यापारियों की बात कर लो जो यहाँ मेरे पास बड़ौदा मिलने आते हैं कहेंगे हाँ जब मेरे सारे कर्जे उतर जाएंगे बस तभी मैं भिक्षु बनूंगा। लेकिन एक कर्जा खत्म हुआ फिर दूसरा खत्म हुआ तीसरा,
इस तरह से कभी वो निकल ही नहीं पाते उस बात से। फिर अगला सत्र है, हमें अपनी साधना में डायरेक्टली अपने मन की ओर देखना चाहिए, और जब वो मन हल्का पड़ने लगे तो फिर उसको सजग कर लें। तो इसलिए सजगता को स्ट्रॉन्ग करना बहुत आवश्यक है। जिसकी सजगता पूरी नहीं है, सती नहीं है, वो ज़्यादा देर तक साधना ठीक से नहीं कर पाएगा। भिक्षु बनना कोई आसान काम नहीं है। आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपने साधना के ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ताकि आप लंबे समय तक उसको कर सकें। और ये तभी संभव होता है जब आप अपने जो आपको चीज़ें आपको प्रिय लगती हैं और जो अप्रिय लगती हैं, दोनों के प्रति आप निर्वेद भाव हो गया, आप उन दोनों से मन भर चुका है। केवल अब होता अधिकतर क्या है कि जो हमको चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, हम उनसे मन भर जाता है, लेकिन जो प्रिय हैं उनसे मन नहीं भरता। तो इस कारण से हम संसार में अटके रहते हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि दोनों के प्रति हमें लिप्सा नहीं रखनी है, तब तक धर्म का एसेंस हमारी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब सुख आता है तो हम समझते हैं यही सब कुछ बना रहे तो कितना अच्छा हो। हम ये नहीं देखते कि जब सुख आएगा तो दुख भी आएगा, और दुख आया है तो सुख भी, दुख जाएगा भी और सुख भी आएगा। हर चीज़ के दो आयाम होते हैं। हम एक आयाम को देख के दूसरे के बारे में भूल जाते हैं, और यही हमारी कमजोरी है। भोजन भी हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन ये भोजन कई बार हमारे लिए नुकसान का भी कारण हो सकता है। तो ये भी हमको जब ठीक से देखेंगे तो ये बात समझ में आती है। जब आपके मन में द्वेष और नफरत जागे तो मैत्री और प्रज्ञा जगाने का अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से आप बैलेंस में आएंगे और मन आपका समता भाव में होगा। फिर वो एक जैन का उदाहरण दे रहे हैं कि जो भिक्षु थे वो एक फ्लैग हवा में फ्लैटर कर रहा था, तो वो एक को कहता है कि हवा जो है उसके कारण फ्लैग चल रहा है, दूसरा कहता है नहीं, फ्लैग हिल रहा है इसलिए हवा चल रही है। तो उनके टीचर ने आके कहा कि यहाँ कोई ना ही कोई फ्लैग है ना ही कोई हवा है, उसको समझने की बात है। तो फिर एक और बात बताते हैं कि जन्म में तो ये होता है कि अगर कोई साधना करने वाला ऊँगता है या ठीक से साधना नहीं कर पाता, तो जो वहाँ पे धर्म सेवक होता है वो आके एक सोटी से उसको जगा देता है। फिर बताने लगे वही फ्लैग वाली एग्जाम्पल का आगे कि अगर हम ठीक से समझें तो देखेंगे सब कुछ संसार में हर चीज़ शून्य है, उसमें कोई सार नहीं है। कोई जब सार नहीं है तो इसलिए हमारे में भी कोई सार नहीं है। तो ना कोई जन्म है, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु है। हाँ, सब जो भासमान सत्य अलग है, लेकिन जो परमार्थ सत्य है उसके हिसाब से सब कुछ शून्य है। और उस शून्य की बात अगर हमें समझ में आ जाए तो मार जो है हमारे पे, उसका हम मार के इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाते हैं। तो जो इंद्रियां हैं वो भी एक जंगल की तरह है, अजान ने आगे कहा। तो अगर हम इस बात को ठीक से समझें कि जो सामान्य ज्ञान है, वो सांसारिक ज्ञान, उसको पेनिट्रेट करके हम प्रज्ञा की ओर ले जाएं तो सचमुच में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हम अपनी प्रज्ञा को एक नए स्तर तक ले जा सकते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो समझते हैं ये भी शून्य है, इसमें कोई सार नहीं है। कोई आवाज़ सुनते हैं तो समझते हैं इसमें सार नहीं है। तो इसी तरह हर इंद्रिय के विषय के बारे में ऐसा हम समझते हैं। तो अगर हम इस प्रकार से समझने लगे तो जो इंद्रियां हैं उनमें कोई सार नहीं रह जाता, वो अपना काम करती हैं और हम केवल जानकारी बनी रहती है। तो जब दुख आता है, दुख की परिस्थिति जागती है, तो हम दुख से चिपक जाते हैं, तो इसीलिए दुख होता है। अगर हम सचमुच में अनात्म भाव में रहें तो जब कोई होगा ही नहीं तो दुख किसको होगा। तो हम जो यहाँ साधना करने आए हैं, इस प्रकार धम्म को समझ के साधना करने आए हैं। हम यहाँ घर छोड़ के जंगलों में इसलिए आए हैं। हम घर से भाग के डर के मारे या पलायन करके नहीं आए हैं।
हम अपने आप को समझने और प्रज्ञा जगाने के लिए आए हैं। लेकिन कई बार लोग जो जंगल में रहते हैं वो वहाँ जंगल के प्रति भी अटैच हो जाते हैं, जैसे शहर वाले शहर के प्रति अटैच जाते हैं, तो इसका मतलब फिर उनका भी मार्ग भटक गए हैं वो। भगवान बुद्ध ने जंगलों में रहना इसलिए प्रशंसा की थी क्योंकि वहाँ पे एकांत रहता है और जो हमको मुक्ति के लिए सहायक होता है। लेकिन वो ये नहीं चाहते थे कि हम जंगलों में ही रह के और उसी के ऊपर अटैच हो जाएं और शांति और के साथ अटैचमेंट हो जाए। हम यहाँ पे प्रज्ञा जगाने आए हैं। जब हमारी इंद्रियां बाहर के विषयों से प्रभावित होती हैं तो हमको लगता है कि ये हमको परेशान कर रही हैं। वो बेसिकली हमारी मूर्खता है, क्योंकि हम उनको समझदारी से प्रज्ञा से देख नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली इंद्रियों के ऊपर जो विषय का स्पर्श होता है वो हमारे लिए एक टीचिंग की तरह है, शिक्षा की तरह है, अगर हम उसको ठीक से देख पाए तो। फिर वो अपना उदाहरण दे रहे हैं एक जंगली मुर्गियों का कि वो जंगल में घूमती थी, आदमियों से डरती थी। मैं उनको चावल भी डालता था तो डर के मारे आती नहीं थी। फिर धीरे धीरे उनका डर समाप्त हुआ तो आके खाने लग गई। तो खैर इसी तरह से हमको भी चिकन जैसे उन मुर्गियों ने अपने आप धीरे धीरे सीखा, उसी तरह से हमको भी मन को इन्वेस्टिगेट कर करके परिस्थिति को जान के ठीक से सीखना होता है। जैसे ही हम ठीक से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो प्रज्ञा जागने लगेगी, तो जो हमारे डर हैं वो हट जाएंगे। और जंगल में रह के शांत मन को शांत करना आसान है और कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। आपको ये नहीं समझना चाहिए कि चलो अब काम पूरा हो गया। असली काम तुम्हारा प्रज्ञा जगाने का है, क्योंकि जब प्रज्ञा जागेगी तभी हम भटकेंगे नहीं, हमारा चित्त कंपायमान नहीं होगा। सामान्यतः जब हमारा मूड अच्छा होता है तो हम एक तरह से बिहेव करते हैं, जब मूड अच्छा नहीं होता तो दूसरी तरह से बिहेव करते हैं। हम अपनी पसंद नापसंद प्रिय अप्रिय के चक्कर में पड़े रहते हैं। जब प्रज्ञा सचमुच में जागेगी तो हम इन दोनों को एक समान देखेंगे, लोक धम्म है उस तरह से देखेंगे, और उससे हमारा चित्त कंपायमान नहीं होगा। अगर प्रज्ञा नहीं है, स्पष्टता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो लोग धम्म ही हम पे हावी रहते हैं और हमको सम्यक दृष्टि से दूर ले जाते हैं। और फिर कह रहे हैं कि अपनी साधना जो है स्टेप बाय स्टेप करनी चाहिए। इस जल्दी में मत रहो कि जल्दी जल्दी हम साधना में अपने को शांत कर लें और मुक्त हो जाएं। मैं भी पहले ये सोचता था कि मेरे में अगर प्रज्ञा नहीं है तो मैं अपने को ज़बरदस्ती प्रज्ञा डेवलप कर लूँगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। मैंने देखा, ध्यान से जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इस तरह से काम नहीं हो सकता। वो सहज सहज रूप से ही होता है। अपनी क्षमता बनाए रखें और साधना करते रहें तो ही प्रज्ञा जागती है। प्रज्ञा के प्रति आसक्ति हो तो प्रज्ञा नहीं जागती। फिर एक मकड़ी के जाले का उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे मकड़ी जाला बुनती है और बीच में बैठती है, और जैसे ही कोई उस पर इंसेक्ट आता है फटक से उसको पकड़ लेती है। तो कहते हैं कि उसको मकड़ी के जाले को अगर आप उदाहरण के रूप में देखें समझें तो वही इसी तरह से हमारा मन भी है जो बीचों बीच रहता है और बाकी इंद्रियां बाहर रहती हैं। जैसे किसी विषय का इंद्रिय स्पर्श होता है तो उसी तरह से जैसे मकड़ी के जाले पे कोई इंसेक्ट आ गया और मन उसको पकड़ लेता है। तो हमारे साधक के लिए सेंटर में आने का मतलब है कि वो सजगता से रहे, सती संप्रजन्य से रहे, हमेशा सजग रहे कि क्या आया, कौन सा किस इंद्रिय पे क्या स्पर्श हुआ, और उससे उसकी आने को जाने कि उसकी जानकारी के बगैर कोई भी काम ऐसा ना हो, ताकि हम कभी भी हमेशा सजग रहेंगे तो इंद्रियों के ऊपर जो विषय का टकराव हो रहा है वो हमको अनबैलेंस नहीं कर सकेगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है।
ये ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बैठे बैठे और वॉकिंग मेडिटेशन करनी है या सिटिंग मेडिटेशन रात और दिन करनी है। ये अगर आपका ये विचार है साधना के बारे में, तो आप अपने लिए बड़ी मुश्किल कर लोगे। जितनी हमारी क्षमता है उतना हमें करना चाहिए, क्योंकि साधना तो हर पोस्चर में हो सकती है। हमें अपने मन को जानना है और इंद्रियों को जानना है, कैसे वो स्पर्श होता है, कैसे वो उनका उदय होता है, कैसे वह होता है। अगर आप इन सब चीज़ों को ठीक से जानेंगे और समझेंगे कि ये सब अनित्य है, दुख का कारण है, तो फिर आप इनके पीछे नहीं रहेंगे। तो फिर आप उनके पीछे क्यों जाएंगे अगर आपकी सचमुच में समझ में आ गया है। मुख्य बात यह है कि आप उसको ठीक से देखें और सचमुच में समझ जाएं कि ये अनित्य है और दुख का कारण है। एक मकड़ी के जाले को ठीक से देखो और समझो, उससे काफ़ी प्रज्ञा के जागने में मदद मिल सकती है। जब हमारे मन ने ठीक से अनित्य दुख अनात्मा बात समझ ली है और वो त्याग करने के लिए तैयार है, तो फिर कोई भी अटैचमेंट हमारे को दुख नहीं दे सकती। तो वो सुख और दुख से ऊपर उठ जाता है। बस ये इतनी सी बात है। इसके लिए कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो जो तुम कर रहे हो उसको इस समझदारी से करोगे, तो इस तरह का जो हमारा साधना का मोमेंटम है वो हमको धीरे धीरे जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकालने के लिए सक्षम हो जाता है। अभी हमने नहीं निकले हैं, क्योंकि अभी हमारे मन में थोड़ी क्रेविंग, कुछ इच्छाएं, कुछ तृष्णाएं हैं। हम अपने मन को हमने अपने कर्मों को शील से बांधा हुआ है, तो बहुत अच्छी बात है। वो धर्मानुकूल जीवन है। कई बार मुझे लगता है कि जब लोग चैंटिंग में करते हैं कि हम अपने प्रिय से ना बिछे हैं, और उनकी तो ये बचकानी बातें लगती हैं, क्योंकि लोग अभी भी वही सब चाहते हैं। क्योंकि मानव स्वभाव है कि हम जो जो चीज़ें हम चाहते हैं हम उनके साथ बने रहें, हमारा जीवन लंबा रहे, कोई मृत्यु ना हो, बीमारी ना हो। तो ये सामान्य मनुष्यों की सोच है। जब आप उनसे कहते हैं कि जो भी आप तृष्णाएं करते हैं उनको नहीं पूरी होंगी तो दुख होगा, तो वो उनके समझ में नहीं आता। जो लोग स्टेडफास्टली लंबे समय तक बगैर प्रमाद के साधना करते हैं, अपने मन को संयमित करते हैं और कांति का धैर्य बना के रखते हैं, तो वो लोग सचमुच में प्रज्ञा को जगा ही लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, उनका चित्त जो है समता में रहेगा और कंपायमान नहीं होगा। एक 2 मिनट शांत बैठ लेते हैं और फिर उपेक्षा भावना का अभ्यास करेंगे। संयोग से अजानचा का टॉक भी उपेक्षा भावना पे समाप्त हुई कि जो लोग धर्मानुकूल जीवन जीते हैं, इंद्रियों को संयमित रखते हैं, प्रज्ञा जगाते हैं, तो उनका चित्त कंपायमान नहीं होता। इसी को उपेक्षा भावना कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि अगर तृष्णाएं बनी रहेंगी तो उपेक्षा रखना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तृष्णाएं, जो इच्छाएं हैं पूरी नहीं होंगी तो दुख होगा और फिर मन बेचैन हो जाएगा। तो अगर हम
ठीक से समझें कि हमारे दुख का कारण हमारी अपनी इच्छाएं हैं, हमारी अपनी तृष्णाएं हैं, तो उपेक्षा भावना पुष्ट होगी। इसीलिए रतन सूत्र में हम सुनते हैं, यो आर्य सच्चान अवेच्छ पश्यति। तो जो आर्य सत्यों को निरंतरता से देखता है, उनका चित्त एक खंबे की भांति कंपायमान नहीं होता, स्थिर हो जाता है। ट्रेडिशनली उसके लिए कर्म सिद्धांत को भी महत्व दिया जाता है। चैंटिंग की जाती है कि अगर हम कर्म सिद्धांत को समझेंगे तो कर्मों को सुधारेंगे, और कभी भी दुख की परिस्थिति आएगी तो उससे सीखेंगे कि हमारे कर्मों का ही फल है। तो आइए उसकी चैंटिंग करते हैं। अस्य का कम्मदायादा कम्मयोनि कम्मबन्धु कम्मपटिसरण यं कम्मं करिष्यन्ति कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादा भविष्यन्ति। हमारे चित्त समता भाव में पुष्ट हो और सभी प्राणियों के चित्त समता भाव में पुष्ट हो, यही शुभकामना उपेक्षा ब्रह्म विहार में। लोक धर्मों के स्पर्श से चित्त कंपायमान न हो, तो उसी को ऐसी शुभकामना हम अपने लिए भी और सबके लिए चाहे सुख की परिस्थिति हो चाहे दुख की, हर अवस्था में मन की समता बनी रहे तो बहुत कल्याण। अपने चित्त को, अपने मानस को और फिर अपने शरीर को उपेक्षा भावना से व्याप्त करके उपेक्षा की तरंगे, उपेक्षा भावना सभी दिशाओं में व्याप्त करते हैं। आज कंसंट्रिक सर्कल्स का मॉडल यूज करते हैं। पहले हम अपने प्रति, अपने घर में रहने वाले सभी लोगों के प्रति, सभी के चित्त समता में स्थापित हो, सभी लोग कर्म सिद्धांत को समझे, दुख के सच्चे कारण को समझे, अपने घर से लेके चारों तरफ के पड़ोसियों के प्रति ये भाव, जिन जिनको हम जानते हैं उनको मन में उनका चित्र रख के
आप सबका चित्त समता में स्थापित हो। फिर अपने पड़ोस से सर्कल को बढ़ाते बढ़ाते अपनी कॉलोनी, अपनी कॉलोनी से अपना शहर, जिस शहर में हम रहते हैं, फिर अपने शहर से अपना राज्य, राज्य से अपना देश। तो इस तरह हर दिशा भी, जितने भी प्राणियों को हम जानते हैं, जितने भी लोगों को हम जानते हैं, सबके प्रति वो भाव। फिर अपना चित्त को महागत करते हुए सारे विश्व के प्रति, सभी लोगों के प्रति यही भाव। उपेक्षा सहगतेन चेतसा एकं दिशं परित्वा विहरति तथा द्वितीयं तथा तृतीयं तथा चतुर्थं इति उद्धम अधोतिर्यं संबदि संबद्धताय संभवन्तं लोकम् उपेक्षा सहगतेन चेतसा विपुलेन महगतेन अपमानेन अवेरेन अव्यापज्येन परित्वा विहरति। विपुल, महान, असीम उपेक्षा भाव, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी द्वेष के, बगैर किसी वैर के, सभी लोगों के, प्राणियों के प्रति, अपने प्रति। चाहे जैसी भी परिस्थिति हो जीवन में, हमारा चित्त कंपायमान न हो, समता में बना रहे। ऐसी शुभेच्छा अपने लिए, सभी मित्रों, परिजनों, स्वजनों, और सभी जानकार और अनजान लोगों के प्रति। सबे सत्ता सुखी होन्तु,
Sabbe hontu chakemino. Sabbe bhadrani pasantu. Ma kinchi papamagama. Ma kinchi sokamagama. Kinchi dukkhamagama. Bhavatu sabba mangalam. Rakhantu sabba devata. Sabba buddhanubhavena. Sada sutti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam. Rakhantu sabba devata. Sabba dhammanubhavena. Sada sutti bhavantu te. Bhavatu sabba mangalam. Rakhantu sabba devata. Sabba sanghanubhavena. Sada sutti bhavantu te. Arahan Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang Namami.